Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I have been explaining about the history of computers from the last 4 lectures. Now today's it will be the last lecture regarding the history of computers. Now let's begin our today's lecture. Today I would like to explain in front of you about the very early computing device which is called of this device are in the next slide. The first of all, it was invented by the American statistician named Herman Hollerith and it was developed in the late 1880s. 1880 की दहाई के आखिर के अंदर इसको इजाद किया गया और इसके नाम की मुनासबत से इसका नाम हॉलिरथ डेस्क रखा गया और इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट्स इस कंप्यूटर को यूटिलाइज किया गया वो अमेरिकन सेंसिस यानी अमेरिका की मरदमशुमारी के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया और डेटा की बहुत बड़ी अमाउंट को इसके अंदर फीड किया गया और रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग उसके ज़रिए कंप्लीट की गई और इसके अंदर कार्ड रीडर इस्तेमाल होता था जो कि डेटा को काउंट भी कर सकता था और रिक्वायर्ड रिजल्ट को डिस्प्ले करने की एबिलिटी भी उसके अंदर मौजूद थी. स्लाइड मार्क 1 कंप्यूटर. It was one of the most popular computer of that. The important features of Mark I computers are as follows. The first one is that it was designed in 1994. इसको 1994 के अंदर हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट ने इजाद किया. अब ये ग्रेजुएट स्टूडेंट था और टू सॉल्व एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन हिज रिसर्च और इसको अपने फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थे बड़े क्रिटिकल किस्म के उनको सॉल्व करने के लिए उसने इस कंप्यूटर को इजाद. एंड नेक्स्ट कंप्यूटर इज दैट द ENIAC कंप्यूटर. Here is the apparent look of ENIAC computer, looking very huge and very large in volume. The important feature of ENIAC computer was is that ENIAC stands for Electrical Numerical Integrator and Calculator और ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया और इसके इन्वेंटर्स दो थे जिनका नाम जोहन विलियम मुशेले और जोहन एकर्ड था और उन्होंने 1946 के अंदर इसको इजाद किया गया. जैसा कि एज वी हैव सीन अर्लियर in the previous slide that it was looking very huge and very large in size. तो ये इसका नेक्स्ट फीचर है कि इट वाज वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज और ये बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था और इसको आम तौर पर जो यूज़र थे वो परचेज भी नहीं कर सकते थे. इट कुड परफॉर्म अबाउट 50,000 एडिशंस पर सेकेंड. ये पर सेकेंड में 50,000 एडिशंस को परफॉर्म करने की सलाहियत रखता था. इट वाज द ग्रेट एबिलिटी विच इट हैज़. ADVAC was the next computer. ADVAC stand for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. It was the advanced form of ENIAC computer. ये ENIAC computer की advanced form था जिसको इजाद किया गया. इन दो हजरात ने इजाद किया और the basic difference between ENIAC computer and ADVAC computer is that in ENIAC computer binary number system was used and ADVAC computer use the in ENIAC computer the decimal number system was used and ADVAC computer used the binary number system. We will see in detail inshallah in the next coming lectures about the number systems of computer. And in the next slide there is a UNIVAC computer. Here is the look of UNIVAC computer. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer and in the I described some important features of UNIVAC computer. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer. As I have just told you, invented in 1951. इसको 1951 के अंदर इजाद किया गया. First computer that was commercially produced for general use. ये
कमर्शियली तौर पे पहला कंप्यूटर था, यानी कि इसका इस्तेमाल तिजारती मकसद के लिए भी किया गया लोगों ने, और बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसको बहुत बड़े पैमाने पे परचेज किया। और ये इनिशियली इसको बिल्ड किया गया था यूएस सेंसस ब्यूरो के लिए, और ये पहला कंप्यूटर था जो कि दोनों तरह के डेटा को टैकल करने की सलाहियत रखता था, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर भी प्रोसेसिंग हम इसमें कर सकते थे, और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर टैकल की जा सकती थी। एंड इन द IBM 650, here is the look of IBM 650 computer, very small in size as compared to previous computers. And the important features of IBM 650 were: number one, it was developed by IBM in 1955. IBM stands for International Business Machine, a very famous hardware company around the world. It could read data from punch cards and magnetic tape, कि इसके अंदर पंच कार्ड के ज़रिए भी डेटा को रीड करने की सलाहियत थी, और मैग्नेटिक टेप के ज़रिए भी डेटा को रीड करने की सलाहियत मौजूद थी। इंशाल्लाह वी विल सी अबाउट दिस टू terminologies in the next coming lecture. It could perform calculations in milliseconds. इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, और ये मिली सेकेंड्स के अंदर, मिली सेकेंड्स मीन एक सेकंड का जो 1000वां हिस्सा होता है, 1000th पार्ट ऑफ अ सेकंड इज कॉल्ड मिली सेकेंड, उसके अंदर ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करने की सलाहियत रखता था। इसको आम बिजनेस हजरात ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा परचेज किया, और इसकी मदद से अपने काम को उन्होंने यानी कि फैसिलिटेट किया, यानी कि ये उनको फैसिलिटेट करता था जो बिजनेस हजरात थे। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर IBM PC, तो ये हमारे पास आजकल के कंप्यूटर की शक्ल है। IBM PC इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे पास हैं: इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1981, इसको 1981 के अंदर ईजाद किया गया। ये स्मॉल था और फास्ट था। इट मीन दैट इट्स साइज वाज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ऑल प्रीवियस कंप्यूटर, एंड इट works at very fast speed as compared to all previous computers which I have described in front of you. It was based on the Intel 8088 processor इसके अंदर इस्तेमाल होता था, और जो peculiarity थी इस कंप्यूटर की वो ये थी कि ये सिर्फ DOS को सपोर्ट करता था, चूँकि उस टाइम कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाइक विंडोज़ हमारे पास मौजूद नहीं था, इसलिए इसके अंदर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था, लॉन्च करना पड़ता था इसको इस्तेमाल में लाने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, today's lecture has been completed, and inshallah in the next lecture we will discuss about the different types of computer characteristics in detail. Okay, best of luck my dear students.